Assalamu alaikum students, welcome you all in your class 8 English class. I hope you all are fine and healthy. As you know, the pandemic COVID-19 has spread rapidly all over the world. That's why we are compelled to take online classes. So take care of yourself and others. Well, as you can see on your screens right now, you are having your English book of class 9. Now let me introduce you to this book. You will read few of the chapters in class 8 and the rest of it in class 9. Now let's move towards the table of the contents of this book. There are total 15 units as I mentioned in this book. Now we are opening the book and moving towards the table of the contents. So students, as you can see here, I'm on the very first page of the table of the contents, and you can see the units here. The first unit we are having here is Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the model of tolerance. Second one is Iqbal's message to youth. Third one is Qaid, the great leader. Fourth one is The Daffodils, which is a poem. Fifth one is the Medina Charter. Sixth one is Nasiruddin. Seventh one is The Two Bargains. Now we are turning the page to find out which other units we are having here in this book. Seventh unit we are having here is Hope is a Thing with Feathers, which is a poem. Ninth unit is The Fantastic Shoemaker. The 10th one is Technology in Everyday Life. 11th one is Safety First. 12th one is The Old Woman, which is a poem. 13th one is Letter to the Newspaper Editor. 14th one is Biodiversity in Pakistan. And the last one is Abu bin Adam, which is a poem. Now we are going back to the previous page of the table of the contents to find out which unit we are going to read today. So we are going to read the first unit, which is Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the model of tolerance. And the theme of this unit is tolerance. It is on page number 1. Now let's move towards the page number 1 of this book. Okay students, the first unit we are having here, Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the model of tolerance, which means Nabi Karam Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam rawadari ke pekar, or we can also say Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam rawadari ka amli namuna. Now we are moving towards the second page of this lesson to start the reading. But before starting the reading, we are having here a pre-reading. Look at the mind map below to predict the content of the lesson. So we are having here a map in which the name of the Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mentioned, and also we are having here Rahmatul lil Alameen, which means Tamam Banino Insan aur Kainat ke liye Bais Rahmat. Then justice, which means Adl Insaf. Then we are having here humanity, which means Insaniyat. Then patience, which means Bardabari. Sadiq and Ameen, which means Sache or Amanatdar. Now we are moving towards the translation of this unit. As you can see, we are having here a bold letters, a blue bold letters. This is a verse from the Holy Quran, from Surah Al-Baqarah. Now we are going to read it. O you who have believed, seek help through patience and prayer. Indeed, Allah is with the patient. O you who have believed, O Iman walo, seek help through patience and prayer. Sabr और नमाज के ज़रिए, सब्र और सलात के ज़रिए अल्लाह की मदद तलब करो. Indeed, Allah is with the patient. दर हकीकत Allah सब्र करने वाले के साथ है. Patient means सब्र करने वाला. This ayat is from Surah Al-Baqarah, the second surah of the Holy Quran, and 153rd verse it was. By tolerance we mean a fair and objective attitude toward those whose lifestyle differs from ours. Tolerance is a virtue which enables a person to forbear the attitude, negative remarks, and action with patience and calmness. The life of Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is a superb example of tolerance. It is his tolerance that let him forgive his worst enemies. Truly, he is an epitome of tolerance, forgiveness, patience, and compassion. The Holy Quran describes him as Rahmatul lil Alameen, a mercy unto the whole mankind and the universe. Now, students, we are moving towards the translation of this paragraph. By tolerance we mean a fair and objective attitude toward those whose lifestyle differs from ours. तवादारी से हमारी मुराद ऐसा मुहज़्ज़ब और बामक़सद रवैया है जो हम उन लोगों के साथ इख्तियार करते हैं जिनका तर्ज ज़िंदगी हमसे मुख्तलिफ होता है. Lifestyle means तर्ज ज़िंदगी. Tolerance is a virtue which enables a person to forbear the attitude and negative remarks and action with patience and calmness.
रवादारी कैसी खूबी है जो किसी शख्स को मनफी रवैया, राय और अमल, सब्र और सुकून के साथ बर्दाश्त करने के काबिल बनाती है। विर्चू मीन्स खासियत या कोई खूबी। The life of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is a superb example of tolerance. नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी रवादारी की उम्दा मिसाल है। नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी रवादारी की एक अजीम मिसाल है। It is his tolerance that let him forgive his worst enemies. यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवादारी है जिसकी वजह से आपने अपने बदतरीन दुश्मनों को माफ़ कर दिया। Worst enemies means बदतरीन दुश्मन। Truly he is an epitome of tolerance, forgiveness, patience and compassion. सच तो ये है कि आप बर्दाश्त, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्दाश्त, शफू दरगुज़र, सब्र और रहमदिली का अमली नमूना है। द होली कुरान डिस्क्राइब्स हिम एज रहमतुल लिल आलमीन। कुरान मजीद आपको रहमतुल आलमीन करार देता है। अ मर्सी ऑन टू द होल मैनकाइंड एंड द यूनिवर्स, तमाम बनीनो इंसान और कायनात के लिए बाइस रहमत। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड पैराग्राफ ऑफ दिस यूनिट. While preaching Islam in Makkah, the Quraysh ostracized him and his family, Banu Hashim. They lived in a valley called Shab Abi Talib. There was scarcity of food and water. The believers had no means of income and they were leading a very tough life for a period of 3 years. During this situation, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, now we are turning the page, moving towards page number 3. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam remained calm and tolerant and never thought about taking any sort of revenge. Even after he had conquered Makkah, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam taught his followers to remain tolerant. After the conquest of Makkah, the Muslim army entered Makkah humbly and peacefully. No house was robbed, no man or woman was insulted. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam granted a general amnesty to the entire population of Makkah. Now moving to the previous page to start the translation of the same paragraph which we started. Acha. While preaching Islam in Makkah, Makkah में इस्लाम की तबलीग के दौरान, while preaching means तबलीग करना, the Quraysh ostracized him and his family Banu Hashim. मक्का में इस्लाम की तबलीग के दौरान कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान बनु हाशिम से समाजी ताल्लुकात तोड़ लिए है। ओस्ट्रासाइज मीन समाजी ताल्लुकात तोड़ देना, क़त्अ ताल्लुक़ कर देना, जलावतन कर देना। दे लिव्ड इन अ वैली कॉल्ड शब अबी तालिब, और वो एक वादी में रहने लगे जिसका नाम शब अबी तालिब था। देयर वाज स्कैर्सिटी ऑफ फूड एंड वाटर, वहाँ पर पानी और खुराक की किल्लत थी, वहाँ पर पानी और खुराक की कमी थी। स्कैर्सिटी मीन्स कमी होना। द बिलीवर्स हैड नो मीन्स ऑफ इनकम एंड दे वर लीडिंग अ वेरी टफ लाइफ फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years. अहले ईमान के पास कोई ज़रिया आमदन नहीं था और वो 3 साल तक तकलीफ़ों भरी ज़िंदगी गुजार रहे थे। बिलीवर्स मीन्स अहले ईमान, मीन्स ऑफ इनकम मीन्स ज़रिया आमदन, टफ लाइफ मीन्स मुश्किल ज़िंदगी। ड्यूरिंग दिस सिचुएशन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिमेन काम, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पेज, एंड टॉलरेंट एंड नेवर थॉट अबाउट टेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ रिवेंज। इस अरसे के दौरान हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुरसकून और बर्बाद रहे और किसी किस्म का इंतकाम लेने के बारे में ना सोचा। रिवेंज मीन्स इंतकाम। इवन आफ्टर ही हैड कॉन्कर्ड मक्का, यहाँ तक कि मक्का फतह करने के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टॉट हिज फॉलोअर्स टू रिमेन टॉलरेंट। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैरोकारों को सब्र की तालीम दी। आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, द मुस्लिम आर्मी एंटर्ड मक्का हम्बली एंड पीसफुली। मक्का की फतह के बाद मुसलमान फौज इनकिसारी और पुरसकून तरीके से मक्का में दाखिल हुई। हम्बली मीन्स इनकिसारी एंड पीसफुली मीन्स पुरसकून। नो हाउस वॉज रॉब्ड, किसी घर को लूटा नहीं गया। नो मैन और वुमन वॉज इंसल्टेड, किसी मर्द या औरत की बेइज्जती नहीं की गई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग्रांटेड अ जनरल एमनेस्टी टू द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ मक्का। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के तमाम लोगों के लिए, मक्का की तमाम आबादी के लिए आम माफ़ीनामे का ऐलान किया। जनरल एमनेस्टी मीन्स आम माफ़ीनामा। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पैराग्राफ। आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, व्हेन एवरीबडी गैदर्ड इन खाना काबा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क्ड द पीपल ऑफ कुरैश, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट एट माय हैंड्स? They all shouted in one voice, kindness and pity, gracious brother, gracious nephew. They were not disappointed. After the conquest of Makkah, when everybody gathered in Khana Kaaba, Fateh Makkah के बाद,
when everybody gathered in Khana Kaaba, जब हर कोई खाना काबा के गिर्द जमा हो गया, जब हर कोई खाना काबा के गिर्द इकट्ठा हो गया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम asked the people of Quraysh, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के लोगों से पूछा, What do you expect at my hands? तुम मुझसे किस किस्म के सलूक की तवक्को रखते हो? अब तुम मुझसे किस किस्म की तवक्को रखते हो? Expect means तवक्को रखना. They all shouted in one voice, kindness and pity, gracious brother, gracious nephew. They were not disappointed. सब ने बैक आवाज़ चिल्ला कर कहा, मेहरबानी और रहम का सलूक, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रहमदिल भाई और रहमदिल भतीजे हैं. And they were not disappointed. उन्हें मायूस नहीं किया गया, उन्हें मायूसी का सामना नहीं करना पड़ा. So then moving toward the next paragraph here, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam said the same forgiving words as Hazrat Yusuf had said to his brothers. Have no fear this day. May Allah forgive you, and He is the most merciful to those who show mercy. नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ी के वही अल्फाज इरशाद फरमाए जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहे थे. Have no fear this day. आज के दिन किसी किस्म का खौफ महसूस ना करो. May Allah forgive you. अल्लाह तुम्हें माफ़ फरमाए. And He is the most merciful to those who show mercy. और उन लोगों के साथ इंतहाई रहमदिली का सलूक करता है जो रहमदिली का मुजाहिरा करते हैं. Moving towards the last paragraph of today's lecture, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam even forgave Abu Sufyan and his wife, who were the worst enemies of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Islam. He plotted many times against the Rasul sallallahu alaihi wasallam, but Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam never did so. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam even forgave Abu Sufyan and his wife, who were the worst enemies of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Islam. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान और उसकी बीवी तक को माफ़ फरमा दिया जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के बदतरीन दुश्मन थे. He plotted many times against the Rasul sallallahu alaihi wasallam, but Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam never did so. उसने बहुत मरतबा नबी करीम के ख़िलाफ़, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ मंसूबे तैयार किए, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह का तर्ज़ अमल इख्तियार कभी नहीं किया. So students, it was the lecture of today. I hope you have noted down the difficult meanings, and now I'm going to share a page with you in which I have mentioned the word meanings of the page number 1 and 2. If you are having any problem in the translation, you can take help from it, and this might help you out. So moving towards that page. So students, you are having a page on your screens right now, in which the unit 1 is mentioned, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the model of tolerance, and I mentioned here the pages as well, which is from page 2 to 3. The first meaning which we are having here is lifestyle, as we discussed, which means tarz zindagi. Then we are having virtue, which means khubi, khasiyat. Then enables, which means qabil karna. Fourth one is patience and calmness, which means sabr or sukoon. Fifth one is superb, which means ali shan, umda. Worst enemies means badtareen dushman. Compassion means rahm. Preaching means tabligh. Ostracize means qat'i ताल्लुक या जलावतन कर देना या समाजी ताल्लुकात तोड़ देना. Valley, wadi. Scarcity means कमी. Means of income means zariya amdan. Revenge means intiqam. Conquest means fatah. Humbly means inkisari. Peacefully means pursukoon. Insulted means बेइज्जती. Gathered means जमा होना, इकट्ठे होना. Expect means तवक्को. Fear means खौफ या डर. Gracious means रहमदिल. General amnesty means आम माफ़ीनामा. So here it was the meanings from page number 1 to page 2 which we read today, and I hope you have noted down these word meanings in your book with the pencil. So students, it was today's lecture, and inshallah we will meet in the next class. Till that, take care, stay home and stay safe. Allah Hafiz.